Assalamu alaikum, my dear students. Today we will talk about bacterial or prokaryotic genetics. जैसे कि हम पहले बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ चुके हैं, and today one lecture is about the prokaryotic genetic. In prokaryotes, we are mainly concerned with bacterial genetics. The bacterial or prokaryotic genetics, bacteria divided by two method. It may be divided sexually or asexually. Bacteria can transfer its genes vertically or horizontally. By vertical gene transfer, bacteria transfer genes by the process of binary fission. Binary fission. And lateral or horizontal gene transfer, horizontal gene transfer occur by a three method. First one is transformation, second one is transduction, and the third one is conjugation. Reproduction means that is the reproduction of a bacterial cell or prokaryotic cell. Reproduction means to increases its number. जब भी बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करते हैं, ये प्रोकैरियोट रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो अपने सेल को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन. तो हमारे पास जब बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन हो रही होती है, तो उसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ जीन ट्रांसफर हो रहे होते हैं. वन इज वर्टिकल जीन ट्रांसफर and another one is the horizontal gene transfer. In vertical gene transfer, we will discuss about the binary fission. Binary fission, as its name indicate, binary means two and fission means breakdown. It is the asexual process of the bacterial reproduction. Over there, the one cell of the bacteria is divided into a two, and the two cell is in turn divided into a 4, 8, and 16, etc. It is a type of asexual reproduction where one cell is divided into a two cell. As its name indicates, binary means two and fission means broken down. When one cell of the bacterial cell is divided into a two cell, and the two cell is in turn divided into a 4, and then 4 into an 8, and 8 cell is in turn divided into 16, and so on and so forth. So हमारे पास हर एक बैक्टीरिया की अपनी एक रिप्रोडक्शन टाइम होता है या मल्टीप्लिकेशन टाइम होता है. जब वो एसेक्सुअली जाके खुद अपने सेल को मल्टीप्लाई करके डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है. जिस तरह के अगर हम एग्जांपल लेते हैं इकोलाई की, सो इकोलाई, Escherichia coli is one of the example of bacteria which is divided in every 20 minutes. So हमारे पास जो बाइनरी फिशन है, ये इसको हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें जो जीन ट्रांसफर होती हैं, दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग वर्टिकली. वी कैन से कि हमारे पास let's draw a diagram over here. If we are having one of the bacterial cell, if we are having one of the bacterial cell which is having chromosomes, that is one of the bacterial cell which is having its genetic material over here. This genetic material or nucleic acid, we can say, this genetic material or nucleic acid will first duplicate itself in the first step of binary fission. This genetic material or DNA of, that is the chromosomes or DNA of bacterial cell. It will get started a duplication. First, this chromosomal DNA of bacterial cell will combine with the mesomer. What is mesomer? Mesomer is the invagination of, and it will start a duplication. It will duplicate and then will combine with this chromosome will attach to mesosome. Chromosome will attach
This chromosome will attach to mesosome. And what is mesosome? Mesosome is the invagination of the cell membrane of the bacterial cell. बैक्टीरियल सेल में अगर हम देखते हैं, अगर एक सेल वाल है तो दूसरा इसका सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन के इन्विजन को या इनफोल्डिंग को बोलते हैं मीजोसोम। तो पहले क्रोमोसोम खुद के नंबर को डुप्लीकेट कर देता है और फिर जाके इस मीजोसोम्स के साथ या इन्विजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल जाता है। It will attach to the that mesosome and will duplicate it itself, and then the cell wall and cell membrane will grow in size. सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों की ग्रोथ स्टार्ट हुई होती है और फिर इसकी इन्विजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। दिस सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल विल इन्विजिनेट इनसाइड टू द one bacterial cell. There will be a partition, or there we can say there will be a part or invagination occur in one cell of the bacterial cell. This cell wall and cell membrane will invaginate to the inside of the bacterial cell, and then it will become divided. This one cell of the bacteria will divided into a two cell. This is one of the chromosomes of the bacterial cell, and this is another one chromosomal body which will duplicate itself. And this is invagination of cell membrane as well as cell wall. It will grow inside to the bacterial cell and then will broken down into a two separate cell of the bacteria will form with its separate machinery of the chromosomes. So that is called binary fission. It is the simplest type of reproduction of the bacterial cell, or we can say it is the simple type of asexual reproduction of the bacterial cell, where one of the bacterial cell will divide it into a two cell. First, the bacterial cell will use its own machinery, chromosomal machinery, duplicate its own chromosome, will combine with mesosome, and then invagination of the cell membrane and cell wall will take place and will divide one cell into a two cell. हर एक बैक्टीरियल स्पीशीज की जो बाइनरी फेशन है या रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइम है वो डिफरेंट होता है। जिस तरह मैंने इकोलाई की एग्जांपल दी कि वो 20 मिनट्स में जाके डिवाइड होते हैं। सो वी कैन से दिस बाइनरी फेशन इज द वर्टिकल gene transfer of specific gene from parents to the offspring. And another one type we can say that is horizontal gene transfer. Horizontal gene transfer is also called lateral gene transfer. If we take an example of bacteria is not properly sexually do its reproduction. Sexual reproduction is not that much specific. The lateral gene transfer means if you like the eye color of some of the individual, तो वो इजीली आपको अपना आई कलर के जो स्पेसिफाइड जीन्स होते हैं उस आई कलर के वो आपको ट्रांसफर कर सकते हैं बाय डूइंग jumping or transfer of that specified gene from one individual to another one individual by adopting these three mechanism, and the three mechanism is over here. अगर हम कहते हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होती तो उसमें वेरिएशन कैसे आती हैं, हम कैसे कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी हर एक बैक्टीरिया स्पीशी दूसरे बैक्टीरियल स्पीशी से डिफरेंट होता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल बनता है कि हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज कैसे बनते हैं अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो हमारे पास मोस्टली जो वेरिएशन आती हैं या जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस शो करते हैं अगेंस्ट द एंटीबायोटिक या अपनी ही स्ट्रक्चर में वो चेंजेस लेके आते हैं, तो उसमें मेनली जो वेरिएशन के लिए जो वेरिएबल फैक्टर है या वेरिएशन फैक्टर्स हैं वो हमारे पास मेनली जो फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है वो सडन हेरिटेबल चेंज को बोलते हैं, और म्यूटेशन के हम मेनली टू टाइप्स पढ़ते हैं, वन इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, अदर वन इज इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस वो होता है दैट इज अकर्ड नेचुरली during replication of DNA. There will be some error occur in the replication of some of the genes, so that is spontaneous mutation. Or अगर हम another type of mutation that is induced mutation which may be due to a chemical or some drugs or radiation के थ्रू हम induced कराते हैं। so सडन हेरिटेबल चेंज को हम म्यूटेशन बोलते हैं, और म्यूटेशन के थ्रू ही हमारे पास बैक्टीरियल की स्पीशीज जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। या अदर
wise, we can say this horizontal gene transfer is also a sexual reproduction, we can call in case of bacteria, that is sexual reproduction, which involve transformation, transduction, and conjugation. The third one, which I will written it over here later on. So the first one type, first we will comes towards the first one type, that is transformation. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारे पास और होस्ट डीएनए, host bacterium cell, host bacterial cell will take a DNA from the external environment or the surrounding and will incorporate the DNA and changes its own phenotype as well as genotype of that bacterial cell. उस बैक्टीरियल सेल के जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में चेंजेस लेके आते हैं. इसके जीन्स में भी हमारे पास चूंकि ये हमारे पास एक फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मौजूद होते हैं इन द आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट, और अगर बैक्टीरिया जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में है कि वो बाहर से वो डीएनए फ्रेगमेंट्स लेके खुद में इनकॉर्पोरेट करके उसी डीएनए में, तभी हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस हो जाते हैं by doing this one mechanism, by doing transformation, by taking DNA from the outer environment and will incorporate the DNA. This is the uptake of DNA of the surrounding, or we can say that is the fragments of DNA from the outside environment which is taken off by this bacterial cell. The red color indicates this is DNA from outside, from external environment, and this is our host bacterial cell DNA, rounded or cylindrical, rounded or spherical. So this DNA will then integrate itself over here into that bacterial DNA and will stabilizes itself over here and will give some different properties to that bacteria, both phenotypically as well as genotypically. फिनोटिपिकली कैसे कि हम कहते हैं कि अगर यही जीन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कैप्सूल फॉर्मेशन ऑफ दैट बैक्टीरियल सेल, तो ये जीन जब बैक्टीरियल सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो ये इसी बैक्टीरिया पे कैप्सूल बनाना स्टार्ट कर देते हैं. तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर ये वाली जीन्स रिस्पॉन्सिबल है तो फॉर कैप्सूल फॉर्मेशन, तो ये ऑल अराउंड द बैक्टीरिया कैप्सूल बना सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास तो हम कहते हैं कि ये इसके फिनोटाइप में चेंज आ गया, और अगर यही जीन्स है क्योंकि ये इनकॉर्पोरेट हो गए हैं टू द होस्ट बैक्टीरियल सेल, सो इट विल चेंजेस ऑल द जेनेटिक फिनोमेना व्हिच अकर्ड इन दिस बैक्टीरियल सेल. So that's all about the transformation. In transformation, the bacterial cell will take a DNA from outside of the cell. तो हमारे पास both the genotype as well as the phenotype of the prokaryotic cell will changes with the change of by taking that fragment of DNA from outside. And the second one type is in case of lateral gene transfer, the second type is transduction. In case of transduction, there will be the virus responsible for the transferring of DNA, and that virus is bacteriophage virus. Bacteriophage means it is that type of virus which will the phage is the eater of bacteria. So हमारे पास bacteriophage आके खुद को पहले अटैच कर देते हैं with the wall of the bacterial cell, and then it is started its injecting its own DNA into the host DNA bacterial cell. When the phage enzyme degraded the host DNA, over here the lysozymes enzymes will secreted by that bacterial bacteriophage DNA and will degraded this host DNA into particles or pieces. And then the third one stage will be the rupturing of that bacterial cell wall. Is the new bacteriophage with a new genetic material will formed in a large amount, and then the cell wall of that bacteria and our membrane or cell wall of that bacteria will get ruptured, and the bacteriophage with a new DNA and the cell synthesize new phages that incorporate phage DNA plus host DNA. ऐसे वायरसेस ये प्रोड्यूस कर देते हैं जिसमें फेज डीएनए भी होता है, बैक्टीरियोफेज का अपना डीएनए भी होता है, और इसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ होस्ट डीएनए हो जाता है. तो यही वाला फेज जो है वो जाके किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसडक्ट करता है, इंजेक्ट करता है इसी बैक्टीरियल डीएनए को,
along with its own DNA. तो जब ये इसको ट्रांसडक्ट करते हैं, दिस ट्रांसड्यूसिंग फेज इंजेक्ट डोनर डीएनए एंड थ्रू द अनदर वन बैक्टीरियल सेल। ये किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल में जब ये वाली ट्रांसड्यूस्ड डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, तो ये इसी डीएनए में दिस डोनर डीएनए इज एंटर्ड इनटू द रिसिपिएंट बाय रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। जब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू ये जब इंजेक्ट हो जाती हैं, तो ये इस डीएनए में, जिसमें फेज डीएनए भी थी और फेज सेल ने आके इसी दूसरे सेल को इन्फेक्ट किया, इसको इसमें वही वाली डीएनए इंजेक्ट की जिसमें ऑलरेडी किसी बैक्टीरियल डीएनए इनकॉर्पोरेट थी। ठीक है, वायरस की अपनी डीएनए भी थी और इसी बैक्टीरियल सेल की भी डीएनए थी। लिसन केयरफुली, यहाँ पे इस न्यू फेजेस में उसकी वायरसेस की या बैक्टीरियोफेज की अपनी डीएनए भी थी और इस बैक्टीरियल सेल की भी डीएनए थी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हाइब्रिड डीएनए जो है या न्यू डीएनए, न्यू phages having two types of DNA, its own DNA as well as the bacterial DNA, ये जाके किसी दूसरे न्यू बैक्टीरियल सेल को जब इंजेक्ट करते हैं और उसमें जब यानी कि यही वाला बैक्टीरियोफेज आएगा और यही बैक्टीरियोफेज जो है वो अपना डीएनए यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेगा इनटू द न्यू बैक्टीरियल सेल। और जब ये इनकॉर्पोरेट करके इसके क्रोमोसोमल डीएनए के साथ या प्लाज्मिक डीएनए, किसी भी डीएनए ऑफ न्यू बैक्टीरियल सेल के साथ मिलता है, तो ये इसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज देते हैं। बोथ द जीनोटाइप एज वेल एज द phenotype of that bacteria will get changed. So this process is called transduction, and transduction is mainly occurred through one of the species, viral species, that is bacteriophage. Now we will come towards the third one type of sexual reproduction or horizontal gene transfer. Okay, the third type is conjugation. Third type of reproduction is conjugation. Over there, the transfer of genetic material or DNA will occur between two cells of the same bacterial species. Conjugation. That is the third type of lateral gene transfer. Over there will be a gene or DNA transfer occur between two bacterial cell of the same species. सेम स्पीशी के दो बैक्टीरियल सेल में जब हमारे पास जीन या डीएनए ट्रांसफर हो जाता है और ये टेम्परेरीली जब एक बैक्टीरियल सेल आता है तो वो दूसरे के साथ मिलता है थ्रू अ पेलाई, और जब वो मिल जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो एक मेटिंग ब्रिज बना लेते हैं और उस मेटिंग ब्रिज के थ्रू वो वाले बैक्टीरिया जो कि फर्टाइल होते हैं वो अपना डीएनए ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द अनदर वन बैक्टीरिया विच इज नॉन फर्टाइल, क्योंकि फर्टिलिटी नहीं रखते। इसको हम एफ नेगेटिव के साथ शो करेंगे। तो एफ पॉजिटिव जो फर्टिलिटी रखते हैं वो बैक्टीरियल सेल या डोनर बैक्टीरियल सेल विल ट्रांसफर इट्स डीएनए थ्रू दोज मेटिंग ब्रिज, और जो हमारे पास एक पिलाई के थ्रू एक ब्रिज बन जाता है फॉर द टाइम बीइंग, उसके थ्रू वो जो डोनर बैक्टीरिया होता है वो अपना डीएनए ट्रांसफर कर देता है इनटू रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल। और इसी तरह ये जो डीएनए है वह इनकॉर्पोरेट होके किसी भी प्लाज्मिक डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरियल के साथ मिलके इनकॉर्पोरेट हो सकता है और उनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। दे आर temporarily two bacterial cell will combine with each other. If we draw a diagram, for example, if we are having, this is one of the bacterial cell which is having its own chromosomal DNA, okay, and this is the plasmid or small circular DNA which is present over here, and the another one cell is this one, another one cell is having its own circular chromosomal DNA as well as the plasmid DNA, and these two cells will come closer to each other and will combine with each other through a pili by forming
bridge, and that bridge is called mating bridge. This bridge is called mating, forming mating bridge. Okay, this mating bridge, I will write it over here, is I will draw another one diagram over there, mating bridge. ओके जब हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स हैं, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए है, इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास है एफ पॉजिटिव, या फर्टिलिटी के लिए जो पॉजिटिव है, ये हमारे पास डोनर स्पीशी है। ये अपना क्रोमोसोम्स या अपने जो एक्टिव इनकी जीन्स है, जो इसके डीएनए है, वो इसको ट्रांसफर कर रहे हैं इनटू एफ नेगेटिव बैक्टीरियल सेल विच डज नॉट हैविंग एनी फर्टिलिटी फैक्टर, और ये हमारे पास रिसिपिएंट सेल है, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल। 2 बैक्टीरियल सेल इसमें मिलते हैं और 2 ही बैक्टीरियल सेल फिर जाके वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। एंड इन द नेक्स्ट वन स्टेप these 2 bacterial cell is they form a bridge. It will transfer its DNA to the another one bacterial cell by giving its own DNA. Okay, this DNA will transfer its own DNA into the another one bacterial cell, and then it will completely passes from that one recipient donor cell into the recipient one cell, and will separate it after some steps. It will get separated into a 2 cell again, and these 2 cell will then having its own plasmid as well as chromosomal DNA. दोनों में हमारे पास दो दो अपनी ही डीएनए रहते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो रिसिपिएंट सेल थे जिसमें हमारे पास फर्टिलिटी की जीन्स मिसिंग थे, वो इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं और दोनों सेल एफ पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके, ये हमारे पास डीएनए इज ट्रांसफर ऑलवेज इन वन वे, यानी ये सिंगल वे ट्रांसफर ऑफ डीएनए है। वन बैक्टीरियल सेल विल बी मस्ट अ डोनर एंड अनदर वन विल बी मस्ट रिसिपिएंट, and then it will transfer its DNA or fertility factor or the genes which is responsible for that fertility factor from one bacterium cell to another one bacterium cell, and then the as a result the 2 cell which is formed is F positive, or both will be positive for fertility factor. So that's all about the reproduction of bacteria. Inshallah, we'll meet you in my next one lecture. Thank you.